So today we will see uh, the what is DevOps and the Git and what is GitHub. So first start with the what is DevOps. So DevOps is a software development approach that combines the continuous development, testing, integration, deployment, and monitoring through the entire development lifecycle. It's a collaboration between the development team and operation team to deliver software faster and more reliable. So, in the development team, first we plan, then after planning we code and build, then test this. This is the main thing of the development thing, and operation team deploy and operate, monitoring and get the feedback. So according to the feedback, again we have plan and code and build and test, and this process is continuously happen. So what is the DevOps life cycle? First, we plan like tools like use Jira and code. Then the tools we used Git and GitHub, and for build application, we use Jenkins using Maven. Maven as a build tool, and testing for testing JUnit test Selenium, and then for release we use Jenkins or GitHub Action. Deployment we use Ansible, Docker or Kubernetes. K8s means Kubernetes, and then for our operation, Terraform or Ansible we will use. Terraform is a infrastructure as a code, and for monitoring, Prometheus, Grafana we will use, and for log monitoring, ELK we use. And let's see the DevOps tools we will study. First, we will study the Git, which is a source code management. Then we will go for GitHub, the remote repository, uh, and then the Jenkins CI/CD, then Ansible configuration management, and Docker for the containerization, and Kubernetes architecture tool to manage the container. Then Terraform infrastructure as a code, uh, and monitoring for monitoring. We will see Prometheus and Grafana, and for log management we will see the Elasticsearch, Logstash and Kibana. Then start with the our first tool, Git and GitHub. So what is Git? Git is a distributed version control system, and GitHub is a cloud-based remote repository platform. So if you will see the what is the difference between Git and GitHub. So Git is a CLI based tool, and GitHub is a web platform, and Git is works in offline, but GitHub we need the internet. The main role is Git is version tracking, and GitHub we can hosting and collaboration, and installation as Git is required installation, and GitHub no need to installation, we can access through our browser. Then the Git work. So how Git will work? So Git, we have to install the Git in our system, or any server we can install the Git. So let's first install the Git. Let's go to the EC2 instance. And click on instance.
launch instance, give any name, give demo, then choose the operating system, then the Amazon machine image. Here I am choosing the free tier, confirm. Okay, and you can see here this is the Ubuntu, and okay, then the instance type T3 micro, and this T3 micro, the virtual CPU is 2 virtual CPU, 1 GB memory, and let's create the key pair. Key pair, create okay. Key pair is the combination of private key and public key, and network leave that is as it is, and storage, this is the storage, 8 GB storage, launch instance. Then view instance, click on connect, then go to SSS client. In this command we can connect the server. Just copy this one, then go to the where we have downloaded the PEM file. This is the PEM file. You can access through git bus here. Yes. So now I can access the server, Ubuntu server. Let's check the Git is already installed or not. Git version. So this version Git is already installed. So what is the workflow? First the working directory. So let me create a working directory first. And go to the inside the directory. Okay, so first I have created the working directory. In this working directory we can write our code, then after writing any code we can the next stage is the staging area. Then after the staging area we will transfer our code to the staging area. Then after staging area we will transfer our code to the local repo. Then we will push it to the remote repository. So first to starting the any coding the yes, Jyoti, yes, yes. ये जो लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी बेसिकली एटा कौन क्लाउड और लोकल रिपोजिटरी का डिफरेंस ना कौन तार हाँ आमर एक्चुअली दीटा दीटा रोचे रिपोजिटरी
दुईटा रिपोजिटरी ହୁଁ कौन पाई रखुचे ना जितेबाला हूँ आमर हूँ रिमोट रे आम रखुचे हूँ गोटे रिपोजिटरी गिथअप देन लोकाली आम रखुचे ओनली गीत रो तो गिथअप रे आम कौन करछे ना बेसिकली कोलाब्रेशन करछे सपोज आम 5 जन डेभलपर अच्छु आम काम करछु ହୁଁ ହୁଁ तो 5 जन डेभलपर ଆଚ୍ଛା काम कला परे तो ताकू हूँ माने जड़े धरक काम करुच्ची लॉगिन फेज रे आउ जड़े काम करुच्ची सपोज ତ ମାନେ अलगा ସୋର୍ସ अलगा କୋଡ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଯୋଉଟା हाँ 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 अलगा अलगा हूँ मड्यूल काम कर तो ସେଇଟା कोलाबरेट करिया दरकार अछि तो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିମୋଟ୍ରେ ସେଟା ରଖିଲୁ ତ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଲୋକାଲ ରିପୋ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କାମ ରାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସେଟାରେ ଯୋଉଟା ତମର ଇଏ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଟା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଠି କଲୁ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହଁ हाँ तो सोर्स कोड ठीक है मैनेजमेंट ये है सपोज इन केस हूँ जनकर सिस्टम खराब हो गला देन डायरेक्टली से रिमोट रू से हम्म आनीपर हम्म हाँ ठीक है हाँ सो let me create any file here uh, write anything let's save this file next one line and save this so first suppose we will get any we will create any repo first we have to initialize the git so git initialized then uh, we will get if we will how to check this folder is initialized ls hyphen la then you can see the .git folder is created so now the next one is the staging area so if I will check here the git status then this is the untracked means our code is not transferred to the staging area first transfer to the staging area we have to add the how to add the command is git add so git add we can if I will give after add space and dot then total enter everything will transfer to the staging area we can also transfer one by one file like giving the file name dot txt then if I will check the git status you can see this is the this file means I have written the file name so this is the file name and this file is untracked so if I will do again git add space dot then total everything will transfer to the staging area let me check again the git status you can see this is the all file are in staging area then this after staging area
we will transfer to the local repository. So how we will transfer to the local repository? The command is git commit -m and give any message my first commit. See, those files are in the staging area. Those file will transfer to the our local repository. Let me do this command, and if I will check the git status, nothing to commit. So how to check the which file is committed or not? Git log, you can see here the commit message and the commit id. Okay, so now we are in the local repository. So our code is in the local repository. Let's see how we will push to the remote repository. For remote repository, we have to log into the GitHub account and create one repository. Log into the GitHub account. This is the GitHub account, and create a new repository. The repository name, and create a repository. So now I have created this repository demo underscore today. Then what will the next step? Create a repository. I have created the repository. Then configure the git local. So I have to configure this in the git local. Local means in our server. First thing, we have to configure this. Give any name here, then configure the email ID. Then already I have git initialized and add the remote repository. How to add this remote repository? Just copy this command, paste it, and you can see the command is git remote add origin and the URL. So remove this one and go to the GitHub repository, copy the URL here. You can see this is the URL. Just copy this one and paste it here. Now our remote repository is configured. How to check? Git remote -e. You can see if this will show like fetch and push, then the we can confirm the remote repository is configured with our local repository.
So what we will do next, then we have already add and commit. Then let's do the git push. How we will push? By this command we can push our code to the remote remote repository. Git push -u origin main. Main means this is the branch. Okay. Because this branch is not present in the GitHub repo. By default it's a master branch, so we have to write the name as this master branch. Then it will ask for the user ID. How we will get the user ID? This is the GitHub user ID. Just copy this one, then paste it. Then it will ask for the password. Then how to give the password? Actually this is the token. You have to give the token. Just go to the setting and go down, developer settings, then click on the generated new access token, give any name, and here we can mention the our token expiry date. Let me give the 7 days and give all access here. Generate token and copy this one and keep it in local also, because once we will close it, it cannot be so next time. Keep this for reference. Copy this again and go to and paste it the password. Actually the password not so. Press enter. You can see, say, go to the remote repository and check. Refresh this page. So you can see the branch is master here, and this is our 2 files, and the commit is my first commit. You can see here. Now in this way we can push our code to from local repository to remote repository. Then go to next slide. What is the git ignore? What is git ignore? Keep the secret logs and build file out of your repository. So security purpose, if we have any password or any secret, we can add this file in git ignore, and this file will not track by the git and cannot push to the remote repository. Suppose let me create one file here.
in the local repository. Vi my underscore pass dot txt, and here my password, anything. Let's save this one, and how we will create the git ignore. Just the file name should be like this, git dot git ignore. Copy this one and create this file in the same repository. Vi, and we have to write the file name, which file I want to ignore it, and insert it. Save this file, and now if I will check git status, you can see this file is in the on track. Let's transfer to the staging. For staging, git add all file, and then commit this one, commit -m, second commit. Okay, let change anything in the existing file. Vi text, and add here line 2, save this one. Then again, if I'll check git status, then this file is modified and this is in on track. Let's transfer to this file to git add to the staging, and then if I will check git status, is transfer to the git staging. Then commit this one, text, line 2 added. Okay, now it's commit. Let's push to the our remote repository. Git push -u origin main. Let's push this. Sorry, this is the master. Okay, then it will ask for user ID. This is the user ID. Paste it here. Enter again. That's the token here. Paste it here. Paste it here. Let's go to the git repository and refresh it, and you can see only git ignore here reflected, and also the this commit line 2 added. You can see line 2 added. This file is reflected, but if I will do ls-l, you can see my underscore pass, this file will not reflected in our remote repository. So in this way we can ignore the file. If there is any secret or anything our any credential, we can ignore this file up to our local repository, means up to our developer. They can use in the local repository, but the remote repository we cannot push this file, ignore this one. You can also file folder, we can ignore the file to push to the remote repository. So actually what happened when
I will push, try to push it. It will ask again and again the password. So how to ignore this one? Mm, configure the credential. How to configure the credential? Just copy this one. By this command we can configure the credential in the local. So okay, after when I will push this, it will once ask the password and the token, then next time it will not ask the user ID and token. So now I am git ignore completed, then go to the git branch. So what is git branch? A branch is the lightweight movable pointer to a commit. It is lets your developer features, fix bug, or experiment in a complete isolated uh, problem from the main code base. Means suppose any bug comes, then how to what is the git flow. If any bug comes, then developer will create a branch from the main branch. Like here we have the master branch. So from the master branch we will create a new branch. Then the developer will do some R&D or do some changes in the code and test on the local, in the local. Then if the code is working properly, then we can merge to the this feature branch, we can merge to the our master branch. For this purpose, the branching technique is helpful uh, for our development life cycle. So how to create a branch? Let's check there is any branch or not. If I will do git branch, you can see there is one branch. This is the master branch. Then how to see the remote branch? There is one remote branch, remote origin master. This is the local branch and this is the remote branch. Then how to create a branch? The command is git branch and the branch name. Suppose the branch name feature feature slash login, press enter, and if I will check the branch git branch, you can see the master and feature slash login. How to switch the branch? Git checkout, then the branch name. Switch to branch feature. Then if I'll check the branch, you can see the pointer is in the feature slash login. Then if I will do any modification in the only the feature feature branch,
let me check the file. Here you can see there is two files. Let me create one more file, vi text to center and write anything, line 1. Save this file and git art git commit hyphen m is for the message, m give any message, text to text line 1 added. So in the feature branch we have this file. If I will switch the branch, check out to the master branch, and see the file, then you can see a text2 is not present here, and in this branch the text2 is present. So let me go to again feature branch and push to the remote. Okay, and push to master. Space the branch name. Here we have to mention the branch name. If I will do the master, it will let me do this first. Copy, paste, username and password means our token. Okay, you can see everything is updated. Okay, because in the master branch everything is updated. We did not change anything in the master branch, but in the feature branch we have changed one thing, means add the this file we have added. So how to push the this branch, means the features slash login branch to the remote. So let me check first which branch, git branch. So I am in the feature branch. So the command is to push the feature branch to the remote. Git push hyphen origin hyphen u origin, then the branch name, means the local. First is the local branch name, then colon, then the remote branch name. If this branch is not present in the remote, then it's automatically created in the remote. See, in the remote there is no branch, only one branch is there, master branch, and in the local this feature branch is there, and it's automatically create the remote branch in the GitHub. See, this time it will not ask for the
any password. Okay, because I have configured this password, and if I will do refresh here, you can see there is two branches, master and feature login. And if I'll go to this branch, you can see this commit message, commit message, text to line 1. Okay. Then this is the branch, git branch. Let's go to the next slide. And how to delete the branch? By this command we can delete the branch. Only git branch -d and feature -d and the branch name. By this we can delete the branch, and git branch -D we can forcefully delete the branch. After delete the branch, to fetch from the remote, means we have deleted from the local, but we will not delete from the remote branch, remote repository. So git push origin -delete, then the branch name is automatically delete from the remote also. Then go to the next slide, git merge. We have created the branch, but we have created the branch and add some file in the our feature branch. Then I want to merge it to the master branch. How we will merge to the master branch? So first we have to check out to the main branch, means our master branch. Let's copy this one. Let's check the branch, which branch. You can see we are in the feature branch. Let me switch to the master branch. Git check out feature / login. Sorry, master. Then if I will check the branch, then I am in the master branch. So now we will merge the branch from feature to master. So if I will merge the branch feature to master, we have to present in the master branch. Okay, so in the master branch we have to present in the master branch, then we can merge feature to master. So paste this command, copy this command, git checkout done, then this one. The command is git merge, then the branch name. Press enter. You can see master. I am in the master branch, and if I will check ls-l, you can see this file which is present in the feature branch. If I will push this to the remote, change the branch name master, and if I will check, refresh this one, you can see in the master also you can see the text to file.
Okay, in this way we can merge git merge uh, to any branch. So let's see the what is the difference between the git merge and the git rebase. So when we use the git merge, the main difference is one to present full history. In the git merge, we will see the full history, but in the rebase, clean up to a massive commit history. Okay, means in the GitHub, if I will check here, uh, log. Log. You can see uh, when uh, I have merged, this commit message is new commit message is created. Okay, and also this commit message which is I have made in the feature branch, this commit message is also showing here, right? But in if I will do the git uh, git rebase, then the commit message will hide. Okay, and let's go to the next. Then the conflict, when this conflict will come, suppose we are working in collaboration work, then some developer modify any changes in the remote. Let me do any modification in this file in the remote. Line 2, line 3, then line 5. Then save this, commit changes. Okay, so I have do some modification in this file. If I will pull this one, then it will show the conflict. If I will pull this one, then it will show the conflict. Let me check the branch. Branch. I am in the master branch. Git pull master.
I will do git pull already updated. Actually it's automatically merge, that's why it's not show any conflict. If I will see the cat text one, this file I have updated text one, it's automatically merge. So let's do some modification here. Line 7, line 8, okay, and commit the changes. So see, I have changed the file in the remote. This file name is text1, and also I will change the file, same file in the local. Let me change anything in the local file, text1, line 10 suppose, and line 11, and save this. Let me do cat. You can see if in this file, means the text1 file, in the local repository I have changed this one, and in the remote this one. Okay, so when I will pull this one, it will show the conflict. See, when I will pull this one, git pull, you can see it will show the conflict error. Changes the following, and which file? This file. So how to resolve this conflict? Go to this file, vi, go to this file and save this one again, and if I will do again, after save we have to git add, because if I will check git status, it will show the on track, because I have saved this file again. So this file is in the workspace, and this is in the on track. We have to transfer to the staging area. So git add, and then git commit -m text 1, okay. Then if I will do again git pull, okay. Let me error failed to the push to the reference. Let's check it.
check this file first. Please make sure you have the correct access value. Check the branch. ये फाइलटा ଯେତେ ଓପନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନେଉନି କି ଫାଇଲଟା କେଉଁଟା କହିଲ? ଯେଉଁ ନା 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 ରିମୋଟ୍ରେ ନା 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 ହଁ। ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ହେଲା କି କ'ଣ ବୋଧେ ଗିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଗିଟ୍ ପୁଲ୍ ଏଇ କମାଣ୍ଡ ତ ପୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ୟୁ ୱିଲ୍ need to specify how to by running following command. Next ये कमांड को उस तरह रन करिए अपन देखिए पुल तो ऑटो मर्ज है एबे है से मर्ज है नथिला सेथिपाई से मागुतला रिफ्रेश करिया पई कि मर्ज करिया पई से मागुतला यदि मु आउ थरे चेक करिवि एटा ये फाइलटा को आउ थरे चेक करूछि vi हाँ एठी से मागिला जे एठी एबे पळे आसला कोन ना जो मोर ऑलरेडी थिला एतिको फाइल थिला आउ दीटा को कंबाइन करिक से देखै दला एठी माने जोटा रिमोट रे थिला प्लस जोटा मोर लोकली थिला दीटा को से कोन कला ना कंबाइन करिक देखै दला तो जेहेतु कंबाइन करिक देखैला तो आज ए डेवलपर से माने डिसाइड करिवे जे मु को कोडटा रखिबी कोन करबी जेताले कॉन्फ्लिक्ट आसीयो तो सेथि पई जोटा भी तांकर दरकार जेमती कि सीरियल तांकर एपट सपट हेति माने जहाँ भी कोड रो जहाँ भी लाइन चेंज हेतिबो जोटा भी तांकर दरकार से अनुसार से कोडटा को चेंज करबे देन चेंज कला परे से कोन करिना फाइलटा को सेव करिवे मनकर एठी किछि चेंज कले देन फाइल को से सेव कले देन फाइलटा सेव कला परे जेहेतु फाइलटा को सेव करचंदी माने से जहाले भी से थिबो कोठी ना गीत जो आमर स्टेजिंग रे ही थिबो स्टेटस यदि चेक करिवा से होची कोठी वर्क स्पेस रे ही थिबो तो वर्क स्पेस रे अछि तो ताको हमकु नबा पड़ियो कोठी ना स्टेजिंग को गीत ऐड करी की स्टेजिंग को नले देन git commit -m text 1
चेक करी कि स्टाटस आसला देन आउ थे मु पुश कर देन मु पुश कर मास्टर देन पुश है पर मुझे जीवी ये देन चेक करी से सेम फाइल रे तो सेम फाइल रे किछटा चेंजेस है तो देखिए केमती चेंजेसटा तो यही चेंजेस तो डिफरेंस से देखेदेला तो ए लाइन नंबर एका सेम रहा तो ये किसी स्पेस वगैरह चेंज होती मुझे चेंज करी माने कौन 5 ऑलरेडी 5 थिला देन ये 6 है तो जो जो चेंज होती से डिफरेंस देखेदेव ये तो आउ थे मे बी मत लगुच बोधे फाइल सेव हो नाला बोली सेमती है मुझे आउ गोटे फाइल ना ट्राए कर से एरर आसिया कथा नाला लाइन 3 लाइन 4 सपोज गोटे डेवलपर एमती लिखिकी ये कमिट करची रिमोट रे को फाइल ना टेक्स्ट फाइल ये फाइल रे करी मो फाइल टाको ऑलरेडी सेव भी करी आउ थे से फाइल टाको लोकली ओपन करुँची देन ए फाइल रे भी किसी चेंज कर लाइन 3 लाइन 4 लाइन 10 तो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली केतबेले आसीबो ना सपोज एमती आमे 4-5 जन काम करूचे तो सेम फाइल रे जदि किसी मॉडिफाई हो गला तो से टाइम रे ही जितेबाला गोटे डेवलपर पुल नब तो से टाइम रे ही कॉन्फ्लिक्ट आसीबो जेमती कि मुझे कली कौन ना ये फाइल रे मुझे कौन करी ना मॉडिफाई किसी करदेली तो ये फाइल रे मॉडिफाई जदि किसी करुँची तो सेम जिनस देखो ये भी मुझे मॉडिफाई कर देछि कैट करी कैट कली तो देख अलग अलग मॉडिफाई मिनिमाइज कर देखा सेम फाइल हाँ सेम फाइल किंतु अलग अलग किसी मॉडिफाई देन मुझे पुल करने को ट्राए करी देखो पुल हो कि ना पुल कली तो से मते देखेला कौन ना एरर ही देखेला पुल कॉन्फ्लिक्ट रे मते एरर देखौची को फाइल रे ओवरराइट करूची मर्ज मते ए फाइल रे से एरर देखौची तो मते आउ थे मते से फाइल को चेक करिया पड़ियो वी तो मते से ये ओवरलैपिंग फास्ट से देखेला जिते बड़े मु पुल कली तो पुल कला बेलू मत जेहेतु ओवरलैप देखेला तो मुझे से फाइल को जाइए फास्ट कौन करी ना चेक कर कौन चेंजेस अच्छे से ऑलरेडी ताको कौन कला ना ओवरलैप से करी देखो से फाइल सेम फाइल को सेम कौन कला ना ऑटो नहीं ओवरलैप करें तार अलग अलग ही कंटेंट अच्छी तो बट से एरर मेसेज दूसरी कौन ना ये फाइल रो ओवरलैप हम यदि सेव करुँची ताले ये फाइल रो ओवरलैप हम तो मुझे जाइए कौन करी ना से फाइल टाको ही चेक करी यदि मो किसी चेंजेस अच्छी तो मुझे कौन करुँची सेव कर जो एगेन पुल करी ना मुझे सेव कली मैंने मुझे गिट स्टाटस आगे चेक करे गिट स्टाटस जेहेतु सेव करछि माने किसी डाटा मॉडिफाई होइछि तो से मते पुणी आउ थे कहले स्टेजिंग को ना गिट ऐड कली स्टेजिंग को नेली देन गिट कमिट
स्टाटस रे मते किसी शो कलानी देन मुझे यदि पुणी एगेन पुल करी से मते पुणी बोधे एरर देखिए ना एबे पुल है ये कौन लिखला ना ऑटो मर्ज ऑलरेडी हो जाइए जो पुल कली से ऑटोमेटिकली से मर्ज ही हो गला जहाँ थिला मु आउथरे दी चेक करी से फाइल टाको स्टाटस रे से ऑटो मर्ज होती से मागला आउथरे सेव करिया पे मु फाइल टाको आउथरे चेक कर टेक्स्ट ये देख से मत ये कन्फ्लिक्ट से मांगला जे कौन ना कौटी कौन चेंज होती से दीटा जाक को रिजल्ट देखो कंबाइन कर तो से मत ये एडिट कर ये देख कन्फ्लिक्ट हेले कौन हुए कन्फ्लिक्ट हेले देख ये भाया ही से देखिए सिंबल पड़े आस कौ फाइल रे कन्फ्लिक्ट ये जमी आस कौ कमिट्रे हाँ आउ पुट तो मत एडिट करा पड़ो मो रिक्वायरमेंट अनुसार मोर 8 दरकार सपोज एक्चुअली डेवलपर तांकर होची कोन माने जोटा भी से यूज करूथिबे जेमति कि जो एडिटर गरा रे ऑलरेडी एगरा माने इजीली ही जीवो जेहेतु आम कमांड लाइन रे करूचे तो से डिफिकल्ट लगुच ना एडिटर रे कौन हम ना से जो आईडी रहा कि जो विजुअल स्टूडियो रहा से ऑटोमेटिकली से शो करदेव जो कौटी कौन कन्फ्लिक्ट हार्ड कली कमेंट करुच्ची कमेंट कली देन ताको पुश करुच्ची पुश टू मास्टर पुश कला परे पुणी अगेन चेक करी रिफ्रेश तापर देखिए ये हिस्ट्री जाइए कौन कौन चेंज होती टेक्स्ट 1 कमेंट करते 4 जोटा थी 8 करी तो सही चेंजेस किए चेंज कर ना पड़े आसो ये केमती आसला ना माने मे बी मु भूल टाइप कर मो नाटा को कहीं कौटू आसला ना से नाटा मुझे ये कन्फिगर फास्ट करी मेल आईडी और ना देखी कन्फिगर करी तो से टाइमिंग पड़ेगा हाँ ये जो मुझे कन्फिगर करी लोकाली रे तो से अनुसार से लोकल डेवलपर को ठारू ही नाटा को से उठेदेव जे किए पुश कर गला गिट ब्रांच सरला डिलीट केमती करेंगे देखिले मर्ज देखिले रिवेस देखिले देन कन्फ्लिक्ट आसिले केमती चेंज हम देन गिट स्टास रे कौन हुए ना गिट स्टास रे सपोज अच्छी आम वर्कस्पेस रे अच्छे माने वर्कस्पेस माने आम ये अच्छे वर्किंग डायरेक्टरी रे अच्छे देन वर्किंग डायरेक्टरी रे अचानक से किसी गोटे काम पड़े आसला तो ताकू आम कौन करिया ना तो जदि अचानक से काम पड़े आसला मुझे से फाइल टाक आड किसी चेंज करुच्ची तो एफेक्ट हम तो से टाइमिंग रे ताकू मु कौन करी ना गिट स्टास रे रखीदेवी स्टास रे रखला परे जेतेबेले माने स्टास रे माने कौन मु माने टेम्पोरारीली ताकू गोटे जगह लोकेट करुच्ची देन मोर जदि किसी काम से कामटा सरीगला जो कामटा करेन्टली आसी तो सेटा सरीगला देन मुझे ताकू पुश कर दूची पुणी मु स्टास रू बाहर करके आनिकी से कामटा को करी देन ताकू पुश करी स्टास काम से देन हूँ रिसेट तो ये केमती हम ना
git reset कौन है ना मूव हम जो हेडर अच्छी तार मूव हम सपोज मो हेडर कौट आसो ना मुझे लॉग देखुची git log log hyphen one line तो ये हेड अच्छी तो हेड हूँ कौटी अच्छी ना यही कमिट्रे सपोज अच्छी कौटी ना यही जो कमिट ये अच्छी तो सही हेड अच्छी मोर तो से अनुसार कौन हम ना हेड ये शिफ्ट हम हाँ तो गोटे कम करवा यहीटा को ही रिसेटा को लास्ट करदे आज आउ देन नेक्स्ट ये ठारू जहाँ अच्छी गीतर स्टार्ट करवा हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक अच्छे तो मुझे रेपोजिटरी फास्ट बाहरी जाऊँगी तो इजी हम टे मु नुआ रेपोजिटरी कर reset ये रेपोजिटरी कली माने गोटे फोल्डर तैयारी कली देन से फोल्डर भीतर गली git इनिशियलाइज कली गोटे मिनट ये करने अपेक्षा मुझे लोकाली करदे इजी रहा एग्जिट कर दी रिमोट ठार बाहरी गली मोर लोकल टर्मिनाल लोकल कहीं से गोटे फोल्डर ही कर सपोज मुझे गोटे फोल्डर क्रिएट करदे फर्स्ट मो लोकल ये न्यू फोल्डर कली तो न्यू फोल्डर भितर मुझे कौन करुच्ची ना मु ऑलरेडी इंस्टॉल कर देछि गीत बाश को मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल कर देछि से मुझे डायरेक्टली जीवी ये तो मोर गीत ऑलरेडी मो लोकल सिस्टम रे इंस्टॉल होइके अछि एंड हाँ तो ऑलरेडी मुझे ये रही तो ये फोल्डर मुझे कौन कली ना गीत इनिशियलाइज करुच्ची तो हो गला गीत इनिशियलाइज तो मुझे किसी कमेंट करुच्ची सपोज ये फोल्डर भीतर को जाऊँगी देन गोटे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कली टेक्स्ट फाइल कलापर मुझे चेक हो git status स्टाटस अनट्रैक होगी अच्छी ताको ऐड करुच्ची स्टाटस चेक कलापर ट्रैक को आसला मुझे कमिट करुच्ची git commit -m फास्ट कमिट कली है देन मुझे गोटे फाइल क्रिएट करुच्ची कमेंट दूसरी आपको बी देन आ गोटे ऐड करुच्छे तीन टा ए बी सी तीन टा कर देन आपको गीत ऐड कली सी दूसरी मुझे देखी गीत लॉग यहाँ मुझे सिंगल लाइन ये कमांड थ्रू रे मुझे सिंगल लाइन देखिए वन लाइन log देखो
your current branch master does not have any commit nahi git status master रे अच्छी git track रे अच्छी तबे कमिट कली कमिट हेलानी किछि ओ सॉरी कौन करछि ना कमिट रो स्पेलिंग ही भूल लेछि सेति पे किछि कमिट ही नहीं ठीक अछि फिर मैं कमिट करे कमिट हला मुझे वन लाइन देखिबी तो सी गोटे अच्छी तापर मुझे किसी एडिट करछि फाइल पड़ेगा कमिट सी अच्छी बी तक करछि देन आ गोटे फाइल खुले अछि एटी किछि टेक्स्ट ऐड करछि लाइन 2 सेव कली ऐड कली देन कमेंट करछि सपोज ए मुझे लॉग देखुची ऑनलाइन रे तो मो पाखे फिलहाल 3टा कमिट अच्छी कमिट आईडी 1 2 3 आउ कौन रहा ना ए बी सी तो 3टा कमिट आउ से अनुसार कमिट्र कौन मेसेज भी दे दीजिए आइडेंटिफाई करने तो फास्ट आम पाखे कौन रोचे ना गीत रिवेस कौन हो मूव द हेडर पॉइंट बैकवर्ड इन हिस्ट्री माने एक्चुअली आमर कौन हम ना किसी गोटे आम कौन करचे ना कमिट कर देचे तो भूल धरक कमिट हो जाइए तो आम ताको रिपोर्ट केमती करवा मनकर मोर एट पॉइंटा अच्छी तो यही पॉइंट रे मु कौन करी ना किसी गोटे लाइन चेंज करी तो से लाइन चेंज होती कि नहीं तो मुझे फास्ट यहाँ कौ फाइल रे करी जो फाइल को क्लोज कर दूसरा मुझे टोटाल क्लोज ही कर तो सेटा ही देखिए तो तार हूँ कौन ना 3 टाइप्स अच्छी तो फास्ट हूँ कौन ना मुझे करी गीत रीसेट सॉफ्ट करी ताहले कौन हम ना अंडू द कमिट ओनली चेंजेस द स्टे नथिंग मॉडिफाइड तो किसी चेंज हेनी जस्ट खाली अंडू हो माने कोटा तार पॉइंटरटा खाली चेंज हम तो देखिए कौन हो कॉपी कली देन पेस्ट करछि तो मुझे लॉग देखुची तो जहाँ थिला सेया रहिला तो किसी इथरे चेंज ही हेलानी देन मु सेकेंड टार धरक करुची इथरे कौन हम ना अंडू द कमिट प्लस ऑन स्टेज चेंज द चेंजेस द स्टे इन द वर्किंग डायरेक्टरी यहीटा हूँ कौन ना वर्किंग डायरेक्टरी रू ही चेंज हम ता छड़ा मुझे जो देखिली आउ थे गिट स्टाटस भी देखी गिट स्टाटस रे भी किसी ना सब मॉडिफाई अच्छी यहाँ खाली वंस खाली से चेक करके कह तो ये किसी चेंजेस ही हम देन मिक्सड रे कौन हो देखिए मिक्स कली मुझे लॉग देखुची लॉग रे ये किसी चेंजेस ही होनी लॉग रे जमती जोठी हेडर जोठी पॉइंट करथिला सेठी ही पॉइंट करिछि जदि मु देखिबी गीत स्टाटस देखुछि
आउ सपोज मुझे टेक्स्ट फाइल देखुची लाइन 2 एथरे ऑलरेडी अच्छी टेक्स्ट फाइल एथरे भी लाइन 1 ऑलरेडी अच्छी मत दबा को पड़ेगा वेट 1 लाइन फास्ट मु गीत सॉफ्ट हेडर हेड लिखुची हेड दिली सॉफ्ट खाली हेड तो खाली हेड देला पर मुझे 1 लाइन देखिए चेंज हेल्न गिट स्टाटस नथिंग चेंज चेंज हेनी अच्छी एथरे भी किसी चेंज हेनी तापर मो हार्ड सॉफ्ट गला मो हार्ड मिक्स्ड हेड कमिट आईडी ही दोच कमिट आईडी डायरेक्ट मिले चेंज होगा कथा सॉफ्टवेयर हेड 1 अच्छा है ये देख कमांड एक्चुअली भूल देते तो ये कमांड थ्रू रे कौन है ना देख पॉइंटरटा चेंज हो गला तो पॉइंटरटा ए कौटी चेंज है ना कमिट बी को चेंज है ना तो कमिट बी को चेंज है जो मुझे चेक करी गोटा 1 लाइन लॉग नहीं मो स्टेटस चेक करुँची तो कमिट बी को है माने सेटा आम जहाँ भी लिखी थी से रहा बट खाली सेटा कौटी पड़ेगा ना गोटे स्टेज पछू पड़ेगा माने आमर कौन फास्ट हूँ वर्क स्पेस थिला वर्क स्पेस रू आम आड करते कौटी आमर स्टेजिंग को तो एबे कौन है ना से स्टेजिंग को पड़ेगा लास्ट टाइम जोटा करते स्टेजिंग को सेठी आम स्टेजिंग को पड़ेगा हाँ तो तापर हूँ सपोज मुझे को गीत आड करुँची गीत आड पुणी स्टेजिंगटा पुणी आसो कौटी ना कमिट हाँपाई देन मु गीत आड सपोज कमिट करी गीत कमिट मु कमिट ना दे दूची सपोज सेम दे दूची ए माने जेमती थिला सेमती रही तो कमिट हो गला मुझे लॉक चेक करुँच ऑनलाइन लॉक ताहले जेमती थिला सेमती पड़े आस देन मु कौन करी ना एबे तापरे जीवी कौटी की ना मिक्स्ड तो मिक्स्ड रे देखिया कौन जदि मु मिक्स्ड माइली तो मिक्स्ड रे एबे कौन हला अनचेंज्ड हो गला माने मु स्टेटस चेक करूची तो डायरेक्टली एबे से कौटी पड़ला ना ये रेड मार्क अच्छी मैंने डायरेक्टली से पड़ोची कौटी की स्टेजिंग को जाऊँ पूर्व स्टेज को पड़ोची जोटा कि आम वर्क स्पेस को से पड़ोची माने मत ये कौन करिया पड़ो ना गीत आड करिया पड़ो गीत आड
मुझे जहाँ चेंजेस करिया कथा चेंजेस करी देन गिट ऐड करी देन पुणी कौन करी ना गिट कमिट सेटा ही करुँच तो जमती थी मुझे रखीदेली आपको सपोज यदि ऑनलाइन में देखी जमती थिला सेमती रहिला देन मुझे सपोज हार्ड ये कर ये कौन हम हार्ड ये कले कमिट सबू जाक एक डिस्ट्रॉय हो अच्छा मुझा देखिए गोटे मिनट मुझे देखी दूसरी यहाँ कौटे था टेक्स्ट टू रे टेक्स्ट टू रे किसी एडिट हो ना देखा टेक्स्ट टू फाइल लाइन अच्छी देख ये जहाँ हम लिखी थी से थिला बस खाली तार स्टेज करा चेंज होता देन मु हार्ड करुच्ची हेड 1 देली हेड 1 यदि मुझे चेक करी वन लाइन तो पॉइंटर देख से कमेंट जोड़ा ए करी पॉइंटर कौटे अच्छी ना बी रे अच्छी एगेन मुझे देखी कौन गिट स्टाटस देखी ये देख गिट स्टाटस रे से कले कौन ना किसी ना कि मत आगुरी कौन देखा गोटे गोटे स्टेप मु पछकू जाऊँगी माने हार्ड मिक्सड आउ सॉफ्ट रे मु गोटे गोटे स्टेप पछकू जाऊँगी बट ये हार्ड रे कौन है ना मत किसी कमिट करा देखनी ताने कौन ना वर्कस्पेस रे ही किसी ना तो मुझे देखी जा मो फोल्डर रे से कौन अच्छी रिफ्रेश कली तो जो लास्ट कमिट जोटा मु करथली सेटार से फाइल अच्छी बट ये देख से फाइल रे किसी लेखा ही ना जोटा कि मुझे लिखी से किसी ना सपोज मु गोटे फाइल सिंपली फाइल धरक सपोज क्रिएट करची देन मुझे सपोज ऐड भी करुच्ची ऐड कली देन मुझे दूसरी कमिट देली सपोज ए देली तो मु सिंगल लाइन देखिली देख गोटे हूँ फाइल ऐड होती को फाइल ना 4 हाँ आ मुझे कमिट ए मैंने देची ए देन मुझे रीसेट करुच्ची हार्ड रीसेट करुच्ची तो कौन हम ना जदि सिंपली फाइल कर फाइल भी डिलीट हो ये देख फाइलटा जो करी फाइल ही ना फाइल ही डिलीट हो तो तार कनक्लूजन हूँ कौन ये 3टार डिफरेन्स कौन हो तो ये बेटर बुझी हम गला हाँ ये बुझी हम कौन ना जिते मु सपोज कमिट हो अप टू आमर ये हूँ लोकल पर्यंत तो आम 3टा सेक्शन ही कम हम तो सपोज कमिट हो तो कमिट हो गला मुझे सॉफ्ट करुच्ची तो से कौन हो ना ये पढ़ाऊँ स्टेजिंग को पढ़ाऊँ है जिते मु हूँ मिक्सड करुच्ची तो से कौन हो ना जोटा कमिट होती थी से 2टा स्टेप पछू पड़ाऊँ एठिकी प्लस एठिकी मिक्सड कलापर रिसेट जिते मु हूँ हार्ड करुच्ची तो टोटाली कौन हो ना वर्कस्पेस रे मु जहाँ भी लास्ट कमिट मोर जहाँ भी थी जो लाइन में कमिट करी जहाँ भी करी जितेटा फाइल करी मनकर ये फाइल रे तो सिंपली मु खाली गोटे फाइल करनी मु बहुत सारा फाइल करी से कौन हम ना से फाइल पूरा अंडू हो पूरा हिस्ट्री भी डिलीट हो तो रेकमेंडेड हूँ कौन थाए ना से हार्ड टाक के इग्नोर करने हार्ड ये इग्नोर करी मिक्सड खाली मिक्सड को ही प्राय समस्ते यूज कर हार्ड कले कौन ना हिस्ट्री भी डिलीट हो किसी आमको मिल ही ना तो सब बेस्ट हूँ मिक्सड करियाटा बेस्ट मिक्सड कले कौन हम ना से डायरेक्टली वर्कस्पेस को पलि आस मैंने 2टा स्टेप पछुक आस सॉफ्ट रे कौन ना गोटे स्टेप मैंने जोटा कि आम स्टेजिंग एरिया रोला से स्टेजिंग एरिया पलि आस तो ये आज थाउ ये थाउ नेक्स्ट ये स्टार्ट करवा हेलो।